मेरे लापता भाइयों को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। मैं थक चुकी हूँ, मैं खत्म हो चुकी हूँ खुद से लड़ लड़ के। मुझे इंसाफ चाहिए। Women and children were at the forefront of the Baloch missing persons camp rally from the Islamabad Press Club to D-Chowk on the 16th of February, chanting slogans for the immediate release of Baloch victims of enforced disappearances. The rally was the culmination of a nearly week-long hunger strike observed by protesters camped outside the press club. Protesters demanded that the Prime Minister live up to his promise of ending the enforced disappearances in Pakistan. Despite resistance from police forces, the campers marched towards D-Chowk in the hope that the government would hear their cries. They reiterated that they have no political affiliation and that all they demand is justice. The Awami Workers' Party, former PPP Senator Faratullah Babar, MNAM-PTM leader Mohsin Dawar, and civil society activists such as Tahira Abdullah and Ammar Ali Jan, among others, also attended in a show of solidarity. In a press briefing on the 15th of February, demonstrators had announced a sit-in at D-Chowk and called upon the government and Prime Minister Imran Khan to produce missing persons in courts for a fair legal trial rather than victimize their families by keeping them in the dark about their loved ones. While addressing the press conference, the spokesperson of VBMP, Nasrullah Baloch, observed that the current government has already released 320 out of a list of 590 missing persons from Balochistan. While this is a positive development, he stated that the government had also a responsibility to end mental torture for the remaining families. He also said that they met Chair of the Senate Sadiq Sanjarani and Chairman of the Commission for Missing Persons Justice Javed Iqbal. The protesters demanded an end to the killing and dumping of missing persons and to produce them in court for trial, even if it means an open trial in a military court. Informing families when their loved ones are arrested in accordance with the Pakistan Protection Ordinance. Appointing a Supreme Court judge to head the Commission on Disappearances and include lawyers, journalists and human rights activists in the Commission and refer outstanding cases to Bench 1 of the Supreme Court if necessary. Informing the families of missing persons who are dead. Sami Baloch, whose father Deen Mohammed Baloch was abducted 12 years ago from a government hospital, attended the rally. हर तरफ से हमें मायूसी रही है और हमारी जो है हमारी बचपन गुजर गई है, हमारी तालीम मुतासिर हुई है। मैं खुद अपने घर की जो है वाहिद कफील हूँ जो अपने घर की जिम्मेदार हूँ। अपनी बीमार वालदा को छोड़कर, अपनी तालीम को छोड़कर हमारी जो है पूरी ज़िंदगी के 12 साल इन सड़कों पर गुजरे हैं, प्रेस क्लबों के सामने गुजरे हैं। हमारा सिर्फ एक सिंपल मुतालबा है, एक सादा सा मुतालबा है कि अगर हमारे लोग मुजरिम हैं, अदालत के मुताबिक, इस मुल्क के कवानीन के मुताबिक मुजरिम हैं, तो उनको इस मुल्क के बनाए हुई अदालत के मुताबिक उनको लेकर आएँ, अदालत में पेश करें। अगर उन पर जुर्म कोई साबित हो तो उनके इस अदालत के मुताबिक, इस मुल्क की अदालत के मुताबिक सज़ा दें। Despite their despair, Sami and her sisters have found the strength to keep fighting and help others such as Hasiba Kamrani, whose cries are heart-wrenching. She has already lost one brother, Salman Kamrani, who was brutally abducted and murdered, and now awaits the release of her other brother, Hassan, and cousin, Hizbullah Kamrani. मेरे 2 भाई हैं, उनमें से मेरे बड़े भाई को साल 2015 में उठाकर लापता कर दिया गया, फिर साल 2016 में उनकी मसखशुदा लाशें फेंक दी गई। उनके साथ मेरा एक और कज़न था, चचाजाद भाई, उनकी भी मसखशुदा लाश फेंक दी गई साल 2016 में। 1.5 साल उसके बाद भी हम खामोश रहे, हमने कुछ नहीं किया। इस 1.5 साल के दौरान हमें हरासा किया जाता और बताया जाता अगर आप कोई भी शोर करेंगे तो आपके भाई की जान को नुकसान होगा, लेकिन हम चुप रहे, हम खामोश रहे। उसके बावजूद भी उन्होंने उनकी जान ले ली और उनकी मसखशुदा लाशें फेंक दी। उसके बाद दोबारा मैं ये समझती हूँ कि हमारे चुप रहने की वजह से दोबारा से मेरे भाई को इन्होंने टारगेट बनाया। हमेशा मैं ये समझती हूँ कि मेरा ही घर क्यों, मैं ही क्यों इनका टारगेट बनती हूँ। फिर से इन्होंने मेरे भाई और मेरे कज़न को लापता कर दिया। मेरा भाई हमारा इकलौता सहारा है, हमारे घर का वाहिद कफील है। हम नहीं समझते कि
اس کے بنا ہم کیسے جئیں گے, ہم کیا کریں گے؟ ہماری زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے, ہمارے خاندان تباہ ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے خاندان کو تباہ ہوتے دیکھا ہے, ہم نے اپنی ماں کی کوکھ اجڑتی دیکھی ہے, بچوں کو یتیم ہوتے دیکھا ہے, دوشیزاؤں کو بیوہ ہوتے دیکھا ہے, ہم نے خاندانوں کو لاپتہ ہوتے دیکھا ہے, ان کی خوشیاں, ان کی زندگی, سب کچھ. As the sit-in continues on Wednesday, Vice President of the PMLN, Maryam Nawaz, joined the protesters to express solidarity and took note of their grievances. Aisha Mir for Voicepkdotnet, Islamabad.